हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू कंप्यूटर सो पिला माने गला क्लास में कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर केदा क्वेश्चन देखिले सो आज यार केटा क्वेश्चन देखमा सो बिना टाइम वेस्ट करके देखने में जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज काना अच्छे द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड डैश फॉर मेमोरी देन का कहला अपन देखो ऑप्शन ए दीजिए मैग्नेटिक सर्किटरी एंड दीजिए बी दीजिए मैग्नेटिक ड्रम्स एंड सी दीजिए मैग्नेटिक बसेस एंड डी दीजिए मैग्नेटिक टिप्स सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर जेंडे पिला माने मैग्नेटिक ड्रम्स so देखो पिलाने क्या कहले द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहिए डैश इज डिफाइंड एज अनप्रोसेस्ड कलेक्शन ऑफ रो ऑफ फैक्ट ऑप्शन ए दीजिए इनफॉरमेशन बी दीजिए फील्ड एंड सी दीजिए डाटा एंड डी दीजिए रिकॉर्ड्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर जेंडे पिला माने डाटा क्या कहले देखो डाटा इज डिफाइंड एज अनप्रोसेस्ड कलेक्शन ऑफ रो ऑफ फैक्ट्स देन देखो Dash is an act of defining, understanding a problem and arriving and workable solution. ऑप्शन ए दीजिए देखो प्रोग्रामिंग बी दीजिए प्रोग्राम एंड सी दीजिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डी दीजिए प्रॉब्लम कोडिंग सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर पिलाने जेनटा की होचे प्रॉब्लम सॉल्विंग सो इन का गला देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए एक्ट ऑफ डिफाइनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम एंड अराइविंग ऑफ वर्केबल solution hela then the next question ka hoise dash software packages allows the users to manipulate numbers option a diche dekho pila mane numbering system b diche database and c diche wordstar and d diche spreadsheets so option d is the right answer pila mane jenta ki hoche spreadsheets so ka kala spreadsheet softwares packages allows the user to manipulate numbers then the next question का कहिए dash is a program that makes the computers to do some things meaningful option a दीजिए देखो पहले process b दीजिए processing and c दीजिए programming and d दीजिए software so option d is the right answer पहले जेंटा की होची software is a program that makes the computers to do something meaningful then देखो कहिए का कहिए सो पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन कला बोलो सो जदी पिला माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आए बोले भाबुथबो सो पिला माने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज then देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो include transaction processing process control and users collaboration system in which of following system option a दीजिए operating support system b दीजिए process control system and c दीजिए spreading roles of information system and d दीजिए transaction processing system so option a is the right answer पिला माने जेंटा होची operating support system so इन का कहिए include transaction process control and users collaboration system in which of following system operating support system टा यूज है प्लान देन देखो नेक्स्ट का कहिए the outstanding invoice file should be stored on a Paradigm access storage device each dash option A दीजिए increasing considering payable are to be answer on a line b दीजिए देखो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर पिला माने सो एतकिडे ऑप्शन पड़ी के हम बेकार टाइम वेस्ट ना करन देखो लॉन्ग আছে सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का है द मेन एक्टिविटी ऑफ द डिजाइन फेज ऑफ द सिस्टम लाइफ साइकिल इज टू डैश ऑप्शन ए दीजिए रिप्लेस द ओल्ड सिस्टम विद द न्यू वन बी दीजिए डेवलप एंड टेस्ट द न्यू सिस्टम सी दीजिए अंडरस्टैंड द करंट सिस्टम एंड डी दीजिए सॉरी पिला माने एंड डी दीजिए कहीं देखो प्रपोज अल्टरनेटिव टू द करंट सिस्टम सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर पिला माने जेंटा ये प्रपोज अल्टरनेटिव टू द करंट सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पिला माने to classification of input are dash to classification of input are dash option a दीजिए maintenance and signal b दीजिए product and waste and c दीजिए maintenance and waste and d दीजिए energies and maintenance so option a is the right answer पिला माने जेंटा maintenance and signals so इन का कहिए two classification of inputs are maintenance and signal then the next question का कहिए producer development occurs within the option a दीजिए maintenance b दीजिए conversions and c दीजिए system building and d दीजिए structural phase so option c is the right answer पिला माने जेंटा system building then the next question is the principal advantages of the centralized approach to organizing a computer facility is dash option a दीजिए processing activities are easier to control b दीजिए processing activities are easier to coordinate
and C is cost effective and D is all of this. So option D is the right answer पिलाମାନେ जेनटा कि हमर principal advantages of the controlized approach organization of a computer facility रे सब जाक option थिसी जेनटा कि all of this है. Then the next question कहिजे how many types of storage loop exist in a magnetic bubbles memory. Option A is the 2, B is 4 and C is 8 and D is 16. So option A is the right answer पिलाମାନେ जेनटा how many type of storage loop exist in magnetic bubbles memory is 2. Then the next question goes three main components of computers are this. Option A is CPU, memory, tap, and B is CPU, input output device and memory, and C is tap, input output device of floppy disk, and D is input output printer mouse. So option B is the right answer. जेनटा पिला माने CPU, input output memory हैला. Three main components of computers are CPU, input, output, and memory. Then the next question goes, which of the following is the greatest advantages of the spreadsheets? Option B is the option A is the database entry and B is a variable entry. Sorry, then the option A is a database entry and B is a variable entry and C is a cross putting and D is a what A alternate and if. So option D is the right answer. Then take what A get alternate and if. Then the next question is which of the following coordinates entries are used to control access to computer. Option A is a binary pass and B is a access codes and C is a password and D is a code word. So option C is the right answer. Password. Then the next question is the person communicating with the manager to identify information needs is the desk. Option A is a system analysts and B is a programmers and C is a vice presidents of information system and D is a executive vice president. So option A is the right answer plan जेनटा कि system analyst. Then the next question का कहै छै performance monitoring and control system for factory floor operation. The best list will be this. Option A is strategy TPS networks, B is manufacturing execution system and C is online transaction processing and C is fault tolerant system. So option B is the right answer पिलाମାନେ जेनटा कि manufacturing execution system. Then the next question का कहै छै Extends provides access to the company's team is operational database and legacy systems by its customers and supplier. The best fit will be this application and extends and B is a business value and extends and C is a business value and entrance and D is a calendaring and scheduling. So option A is the right answer जेनटा कि application and extent. Then the next question काय होई छै a computer systems that serves as a filter for access to and from other networks by a company's network computers are this. So option A is a control for end user computing and B is a firewall and C is a orienting information system and D is a UD thread. So option B is the right answer पिलाମାନେ जेनटा कि firewall. तो नेक्स्ट क्वेश्चन का कहै छै हमर लास्ट क्वेश्चन आज देखो पिलाମାନେ managing systems analysis and design computers programs and system maintenance activities are called this. Option A is system development management and B is chief information officer and C is information service functions and D is end user services. So option A is the right answer पिलाମାନେ जेनटा कि system development management. So पिलाମାନେ आज लगे क्लास 20टा क्वेश्चन थला देन देखो जदि किसी भी प्रोब्लेम होता कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन के क्लास हो किसी भी जदि प्रॉब्लम होता सो कमेंट बॉक्स रे कमेंट करो से रिलेटेड मैं वीडियो तुमको दे देंगे.